ग्रीटिंग्स एवरीवन। मैंने सोचा कि अब सेशंस थोड़े से लंबे किए जाएं जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए आज जो टॉपिक मैंने सोचा जो हम लोग जिस पे बात कर सकते हैं जिसको डिस्कस कर सकते हैं मैंने रखा स्टेटहुड। एंड उसमें भी मैंने एम्फोसिस किया डिमांड ऑफ स्टेटहुड। आज हम सारे लोग देख रहे हैं कि लद्दाख में, लेह में स्टेटहुड की मांग हो रही है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने श्योर किया था मैनिफेस्टो में। और मे बी वो डिमांड पूरी भी हो जाए। वैसे तो जो फास्ट था जो उन्होंने आमरण अनशन किया था वो तो टूट गया है, बट शायद हो सकता हो कि बिफोर इलेक्शंस और आफ्टर इलेक्शंस वो पूरे हो जाए। बट स्टेटहुड का डिमांड एक ऐसा डिमांड है जो आज से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और हमें समझना पड़ेगा स्टेटहुड का डिमांड होता क्यों है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं, और उसके अलावा प्रदेश अगर छोटे भी हैं तो वहाँ पे गवर्नेंस के फॉर्म बदल जाते हैं। जैसे जब हम पब्लिक पॉलिसी को बहुत क्लोजली देखेंगे तो जिस तरीके से एक प्लेन पे गवर्नेंस किया जा सकता उसी तरीके से किसी हिली एरिया पे नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से एक हिली एरिया पे गवर्नेंस किया जाता उस तरीके से एक कोस्टल एरिया में गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देयर वर वेरियस इंस्टेंट्स जहाँ पे स्टेटहुड डिमांड की गई। और इसको समझने के लिए हमें 21st सेंचुरी में देखना होगा कि क्या हुआ 21st सेंचुरी में। एज पर डाटा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट डिमांड किए गए, और चौथा स्टेट जो था वो तेलंगाना था जिसका डिमांड उठा। 21st सेंचुरी में जब हमारे पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे कुछ इतने अच्छे थे, और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम कर रही थी, तब वी वेर इनटू दी बैड गवर्नेंस जहाँ पे 4 स्टेट मांगे गए। तो व्हाट अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसे समझना होगा हमें कहानी के थ्रू कि आज़ाद हिंदुस्तान में कुछ प्रोविंस थे। उस प्रोविंस के अंडर जो गवर्नेंस थी वो करने में बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो प्रोविंस थे उसके अंदर से क्लेम्स आए ओवर फ्यू आइडियाज। द फर्स्ट आइडिया वाज ओवर लिंग्विस्टिक मैनर, एंड द सेकंड वाज ओवर ट्रेडिशन एंड कल्चर, कि हमारे कल्चर इनसे अलग है, हमारे ट्रेडिशन इनसे अलग है। और फर्स्ट एज आई मेंशन लिंग्विस्टिक ओवर लैंग्वेज। इसे समझने के लिए हमें एक डाटा को क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा। जो डाटा स्पेसिफाई करता है कि आफ्टर 1950 there were more than demand of 30 different states pan India। उस 30 states में बहुत उत्तर प्रदेश के थे, फिर उसके बाद फर्दर बिहार का जब डिमांड किया गया, तो दिस वेर आफ्टर 1950। और इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि तेलुगु डिमांड जो हमारा सबसे पहला डिमांड था एक स्टेट बनाने को लेके। सो द नेम वाज वेरी टफ, इट वाज पोतिया Shriramulu. So maybe if I'm pronouncing it wrong, I will not try to emphasize upon data more. I will try to emphasize upon the ideology and the perception of the thinking in this issue. So he started the first demand for Telugu speaking population. Okay, so उनकी डेथ हो गई और उन्होंने फास्ट रखा था, दैट वाज इंडेफिनिट फास्ट, जब तक उनकी ये मांग पूरी न कर दी जाए। तो आफ्टर हिज डेथ द क्राउड वेंट मैड, और उसके बाद बहुत कम्युनल दंगे हुए, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ी। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक चीज़ बनी जिसका नाम हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो इसकी डिमांड थी। तो इस कमीशन को हेड कर रहे थे, इस कमीशन को हेड करने वाले आदमी का नाम था के एम पानिकर। सो के एम पानिकर साहब से पूछा गया कि आप स्टेट क्यों बनाना चाहते हैं। उन्होंने सजेशंस दिए, उन्होंने बहुत स्टेट्स के सजेशन दिए जिन्हें मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल बॉम्बे था, तो इन 1960s बॉम्बे स्प्लिट हो गया और वो हो गया महाराष्ट्र एंड गुजरात, एज आई मेंशन ओवर लिंग्विस्टिक मैनर। ओके, एंड 63 में नागालैंड केम आउट ऑफ आसाम। फॉर एग्जाम्पल 66 में हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश केम आउट ऑफ पंजाब, एंड द लिस्ट इज देयर। मैं इसे शेयर भी कर दूंगा। अलॉन्ग विद दैट जो हमारी एक मेजर डिमांड रही थी
जिसके ऊपर आज मैं एम्फेसिस करने वाला हूँ, विच वॉज द डिमांड फॉर 4 डिफरेंट स्टेटहुड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा प्रदेश जिससे ऑलरेडी 21st सेंचुरी में एक अलग स्टेट निकल चुका है, दैट वाज उत्तरांचल पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसे आज़ाद स्टेट देने के बाद, मतलब स्टेटहुड मिलने के बाद, वो उत्तराखंड हो गया। वहाँ पे 4 और प्रदेश के डिमांड है, और ये डिमांड आज मैं नहीं कर रहा हूँ, आज ये डिमांड कोई और नहीं कर रहा है। ये डिमांड सबसे पहले 2011 में मायावती गवर्नमेंट, मायावती वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने डिमांड रेज की थी। और अकॉर्डिंग टू दी prototype which she made, it was Purvanchal, the eastern Pradesh, okay, the eastern UP, and Pashchim Pradesh, that was the western UP, Bundelkhand, that was the southern UP, and Awadh Pradesh, which was the central UP. इसका डिमांड किया गया in 2011. She passed the state legislation. After that, the central legislation has given no response to it, and they were not in the idea to divide it. But क्या ये आस्क किसी स्टेट से दूसरे स्टेट बनाने की क्या वैलिड है? बिकॉज वन विल थिंक दैट हमारे कल्चर ये सारे यूनिफाइड है, हम एक टेरिटरी के अंदर है। तो ये सवाल समझने के लिए हमें आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की स्पीच पे जाना पड़ेगा। सो पंडित नेहरू ने, आई विल लाइक टू कोट, पंडित नेहरू ने स्पीच दी थी इन लोकसभा ऑन जुलाई 7th 1952। उन्होंने कहा था, आई फॉर माई पार्ट वुड बी परफेक्टली एग्रीड इफ देयर वेर अ proposition that Uttar Pradesh, for instance, be split into the 4 provinces. However, I doubt very much if my colleague from Uttar Pradesh would relish the idea. On contrary, they would probably like to have an additional chunk from some other province. जैसे उस समय डिमांड किया जा रहा था उस समय के बहुत बड़े लीडर पंत जी के द्वारा कि मध्य प्रदेश के कुछ प्रोविंस जिनके कल्चरल जो वैल्यू है और जो वहाँ के ट्रेडिशन है, दैट इज़ वेरी मच इन रिलेशन विद बुंदेलखंड, कि हम उन्हें उत्तर प्रदेश में जोड़ लें। बट क्या एक प्रदेश जिसकी कुल जमा पॉपुलेशन अभी 200 मिलियन है, और बाय 2050 इट इज अज्यूमिंग दैट द उत्तर प्रदेश विल हैव 420 million population. Today, 16.5% of the India's population reside in Uttar Pradesh, and by 2050, according to the data, that it will be 25% of the whole India. जहाँ पे 75 districts हैं, 820 blocks हैं, and 52,000 ग्राम पंचायत। क्या इसको एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गवर्न करना इज अ पॉसिबल टास्क? दैट आई डोंट बिलीव। और इसे बहुत क्लोजली एनालाइज किया बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर की एक पार्लियामेंट्री स्पीच डेटिंग 21st of July 1952। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, उन्होंने एक सबसे बड़ी बात बोली कि द दिस प्रपोर्शनेट लैंड एरिया एंड इन्फ्लुएंस ओवर द लार्ज स्केल पीपल इन उत्तर प्रदेश इज मेकिंग अ सिचुएशन बैड फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जब हमारी प्रोविंस बहुत बड़ी है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स उतने अच्छे तरीके से हम उन्हें परफॉर्म नहीं कर सकते, तो दैट विल नॉट बी ए इजी टास्क फॉर द गवर्नमेंट। एंड एट लास्ट, टेकिंग दिस थिंग अपार्ट फ्रॉम द ईगो दैट आई हैव एनालाइज्ड, और इसे समझने में एक बहुत लंबा अरसा लग गया कि किसी से कहना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इज हैविंग द लार्जेस्ट, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जनरल इलेक्शन इन Lok Sabha, and it is the highest, in fact. So that is for the political mean. We have seen that the southern India में जो statehood था, according to the data, I would like to give some data over this, that major of the demand of statehood which has been successfully accepted are majorly from South India, and the second is Northeast. Because of the political influence, we have to analyze that
सदर्न इंडिया जहाँ पे एक लंबे समय से राइट विंग पार्टीज का कमांड नहीं था, because of the, we can say, the awareness, social awareness of the people of South India, or maybe they got exposure more as compared to northern India, but उनके पास राइट विंग पॉलिटिशियंस के वहाँ पे स्कोप्स कम थे, और जो सेंट्रल आइडियोलॉजी के लोग थे या लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, उनकी उनकी एक आइडिया एंड बिलीव थी विच वेयर यूनिफाइड, विच वेयर द यूनिफाइड फॉर ऑल द पीपल ऑफ साउथ इंडिया. बट इन नॉर्थ इंडिया दे थॉट टू उसे हम बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, और उस मैनिपुलेशन को समझने के लिए उन्होंने बहुत ही लेट लगाया फर्दर स्टेटहुड देने में. फॉर एग्जांपल, बिहार से जब स्टेटहुड की डिमांड हुई तो झारखंड अलग हुआ, एंड दैट टू झारखंड का जो डिवीजन था दैट वाज नॉट इन द अप्रोप्रिएट मैनर व्हिच वाज सजेस्टेड बाय द कमीशन. Same goes with Uttar Pradesh. We know that in one state there are more than various traditions which has been followed. Okay, and as we talk about, we are having diversity, but at last we have to see the governance at first. I will take some examples. For example, जब मायावती ने एक डिमांड की, the demand was in respect with 4 different state, जहाँ पे उन्होंने 2 स्टेट जो बताया, पूर्वांचल और पश्चिम प्रदेश. Let's have a case study. Let's have a case study that what is the difference which has been established between Purvanchal and Pashchim Pradesh. Okay, all the all the major MNCs which are there in Uttar Pradesh are in Pashchim Pradesh, not in Purvanchal. Coming over the employability, so the Pashchim Pradesh shows the employability of more than 75% in whole of Uttar Pradesh, which clearly established that there is a vast difference between Pashchim Pradesh and Purvanchal. And in fact, the remaining 25% is divided into 3 different suggested provinces. Okay, coming over the life expectancy, it is far more than Purvanchal. The literacy rate, no comparison. So we have to understand that the major area of development in Uttar Pradesh was restricted to Pashchim Pradesh. And let's talk about now infrastructure. Okay, so the Bundelkhand province is one of the most underdeveloped province. Okay, so according to the data which was published by one private institute, establishes that the most developed province, or the demanded province of Uttar Pradesh, was Pashchim Pradesh, followed by the Awadh Pradesh, followed by the Purvanchal, followed by Bundelkhand. Now we are talking about Bundelkhand, which is the portion where the governance is over sand. Okay? This I'm not telling. The former DGP mentioned that the Bundelkhand is now converting to the Thar. Why? Because आज के दिन हम हटा दें, जब हमारे देश में मिलेट्स का प्रमोशन हुआ, वहाँ पे बुंदेलखंड गॉट गुड फार्मिंग स्कोप, बट बिफोर दैट वी वर द अग्रेरियन सोसाइटी, एंड the policies of Uttar Pradesh which has been made was in reference with all the agrarian provinces. Okay, and Bundelkhand is very much dependent upon other skills rather than agriculture. तो by the virtue of law उन्हें वही काम करना पड़ रहा है जो काम वो नहीं कर सकते, और इस काम के लिए उन्हें जो सब्सिडीज मिल रही वो तो किसी काम की है ही नहीं उनके लिए, क्योंकि उन्हें तो एग्रीकल्चर करना ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उसका स्कोप ही नहीं है. इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझना पड़ेगा हमें कि then the question will arise that then how we will going to govern these things. Okay, इसके लिए हमें एक एनालिसिस देखना होगा जो उठा था ओवर द डिवीजन of some territories of Amravati and Nagpur. Okay, there was one belt. The left side, we can say the left side of the belt, let's understand by an example. The left side of the belt was having the agricultural land, and the right side of the belt were having the sandy area, which was not competent for the agriculture. So out of the division method, there were 3 advocates who were talking about this issue in the Supreme Court. And in the case
And in the judgment passed in year 1972 on May 1st, it established that it's not about the statehood which has been demanded, it's about the idea and about the cultural changes which they are facing. Okay, so अगर कोई इसका भी एक रीजन देता है कि इकोनॉमी कैन बी बूस्टेड बाय दीज थिंग्स एक्स वाई जी फैक्टर्स, ओके, दिस डजंट मैटर बिकॉज when we will understand the linguistic manner, there are more than 25 linguistic categories in Uttar Pradesh. But at last, when we will analyze and compare the linguistic idea of each and every demanded four province, it is very much different. Okay, because we have to understand that the idea of language was established with the area that where we are. Okay, for example, let's take an example of two cities of Purvanchal. Okay, so Varanasi and we can take Gorakhpur. They both are having two different type of languages, but the mother language of both the cities are same, that is Bhojpuri. But at the end of the day, there will be a complex change between the language of Bhojpuri itself. Okay, so as we know, as the demand of Awadh Pradesh was there, so Avdi is also of various types. Okay, we have to understand one more thing out of it. The proposal which Mayawati led was driven from his political ideology boss, for example, B.R. Ambedkar. Okay, B.R. Ambedkar already given various ideas that how we can have a good governance over the state, and for that he was very much concerned. He got concerned because of various reasons. Because uh, today we consider, or people consider him the leader of SC or ST, anything like that. But as we all know, that he is the father of the Indian Constitution, first law minister. Out of the concern, he mentioned that there are set of states which should be further reorganized. That's why the commission has been made. And in reference to Uttar Pradesh, he given some stat. So I'm referring the stat in the volume 15th of the research of Dr. Bhimrao Ambedkar. He mentioned that the productivity of the primary sector will increase in each and every province with 22% after the reorganization. In in secondary, it will going to increase by 12% in each and every province, because of certain idea. Okay, certain ideas are which was established by, as I mentioned, that there was commission which was made, and the chairman of that commission, KM Panikar. KM Panikar has already suggested the idea of second state. Okay, this is a very interesting fact to know. Okay, उन्होंने सजेस्ट किया कि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से कर दो. Okay, it is in way back 1956. Okay, the first will be Uttar Pradesh and the second will be Agra. Okay, he suggested the name of the state as Agra. But as we all know, because of the political influence and the political benefit, the idea got rejected. But at the end of the day, today, if we are all sitting here, and I think there will be some people from Uttar Pradesh or any of the disputed area which is demanding the reorganization, should have to understand that it's not about the area, it's about a good governance. For example, if any country is having a very large amount of area, but they are not able to govern it at very good level, then there is no need of area, because the state, the country, nation, anything generally known from its citizens or the people who reside there. जब हम इसकी एनालिसिस को समझेंगे तो रशिया रशिया के पास बहुत ज़मीन थी, पर रशिया को भी अपनी कुछ ज़मीन जो उसके किसी यूज़ की नहीं थी, वो वहाँ तक गवर्नेंस ले ही नहीं जा पा रहा था, वो यूएस को बेचनी पड़ी. आई एम टॉकिंग अबाउट अलास्का. ओके, और उन्होंने ये ज़मीन यूएस को बेची, यूएस खरीद लिया. और there were the reorganization between the states. There are the two concept of state. Here
we analyzed that the major of the portion which Uttar Pradesh is having does not fall under the idea or the performance of the good governance. So therefore, I'm also preparing second part of it, that what will be the administrative form if the Uttar Pradesh will be reorganized. Okay, so this was my idea, and I will make sure that after within every week or 3 days, I will come up with such topic, and I will make an interactive video to give you some insights that what can be done to make the nation more better to live. Okay, so this is Parth Raman. I'm signing off. Thank you.